Anji, can you hear me now? I'm hoping people will be able to hear me now. Yeah, is it clear? So, welcome everyone. We are here to start a free session for everyone for CSAT for this upcoming Prelims 2022 exam. These sessions will primarily focus on the mathematics part, which is the quantitative aptitude, and the reasoning part. The comprehension part, we'll see if the time permits, we'll deal with it later after these part are done. And why we are doing so is because in the past couple of years, starting from 2018, the importance of mathematics as well as the reasoning part has increased manyfold. While there used to be hardly 15-20 questions from maths and reasoning put together, in 2018 there were 37 questions from maths. In 2019 there were 41 questions from maths. In 2020 there were 48 questions from maths. And in 21 again they were on a slightly lesser side. There were, I think, 27, 28 questions from math, but rest from reasoning. From the English comprehension aspect, there were hardly 25 to 26 questions in the past 4 years each. That means, out of the 80 questions that are there are 55 questions that will require some sort of reasoning ability that one should develop. And if you have to develop this, it is not going to be developed overnight. आप लोगों को कम से कम इसमें 2-3 महीने spend करने पड़ेंगे, right? So now is a good time. We are exactly 4 months away from UPSC Civil Services exam, and if you start now, it will be a very easy and a very convenient process. If you try to do it later, it will become a very difficult. So, after today's class, I will urge all of you, first of all, to take some sort of a diagnostic test. Okay, pick up either a previous year UPSC paper that you may not have attempted. People who have attempted 2021 can try for 2020 paper. People who have not attempted 2021 and it's their first attempt, they can try the 2021 paper itself. And there are multiple keys that are available in the market. I have also upload the keys for the past 3 years on this on the description of this video. After the video after the class is over, you can check it from there. So take the test, create a baseline, see if you are able to score somewhere around 90-100 marks or not. If you are scoring less than 70 or less than 75, there is a problem. We never know what's going to happen in the next exam. There's a lot of pressure also and everything. So we have to score somewhere around 90-100 marks in this paper. हम बाद में परेशानी नहीं चाहते हैं कि जीएस तो अच्छा हो गया है बट सीसैट में पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है? So required target for us is 90 to 100 marks. Don't aspire for 66 marks, don't aspire for 70 marks, don't aspire for 75 marks. Especially if you are not very strong in maths. Because English में जो reading comprehension questions are there, you don't know what answer UPSC will take as a correct answer because a lot of ambiguity is generally there in all these comprehensions that are there. So out of the 25 questions that are asked from comprehensions, reading comprehension say 25 to 27 questions are being asked in the past 4 years. इसमें से कम 10 क्वेश्चन तो एम्बिगुअस होते हैं. Right? So you never know. आपको लगेगा सही है और आज गलत हो जाएगा. So instead of getting plus 2.5, you will end up losing 1/3 of the marks. इस पे हम बहुत ज्यादा rely अब नहीं कर सकते. ठीक है? Initially when CSAT was introduced, it was not that big a problem. आराम से English आसान आती थी और बहुत आराम से आप आंसर कर पाते थे. But now that is not the case anymore. After that, if I have to tell you the exact number, give me 1 second, please. Okay, so the maths part in 2021 put together. Let me erase this. अगर मैं क्वांट की बात करता हूं जिसको मैथ्स भी बोलते हैं, in 2021
there were 36 questions. 2021. Okay. In 2020, there were 46 questions in 2020. इसके अलावा जो रीजनिंग पार्ट है, रीजनिंग में आपका in which we are taking clocks and calendars, puzzles, direction questions, and all that. There were 17 questions in 2021, and in 2020 there were 12 questions only. Okay. So if you see these numbers, you will see the importance of maths, which has been increasing. On maths, when we talk about maths, the highest number of questions that are asked in maths is from number system. We will cover this also, but not in the beginning. क्योंकि सारी क्लासेस नंबर सिस्टम से स्टार्ट होती हैं. A lot of people get bored. इसमें से अप्रोक्सीमेटली 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं हर साल. नंबर सिस्टम में आपका फ्रैक्शंस and natural numbers and all these kind of things are there. So we are going to cover this as well. So maths बहुत important हो गया है and a lot of you fear maths और आप लोगों को वैसे भी लगता है कि एक महीने में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे. And there has been multiple cases in this year as well as the previous year that people were scoring a good 110, 115 in GS, but they could not manage to clear the cutoff in the CSAT paper itself. Okay. Now, what is different in our classes? There are so many multiple CSAT classes that are there in the market that you can always watch or subscribe. First of all, these are free classes, right? Maths is a skill, a basic life skill. Nobody should be charged to learn maths. So, with this logic, we are going to give all the classes for free on this YouTube platform. Number two, in most of the classes, you will see there is a very huge emphasis on learning or cramming the formulas. Different types of questions, different type of formulas. This is where people get confused. This is where people find it overwhelming. कि यार कितने सारे formula कैसे याद करें? There are multiple types of questions that can be asked. So we are not going to emphasize on formulas. Personally, I have never used too many formulas when I used to take the exam, and I have never scored less than 190 in my CSAT paper. Okay? If you understand the logic, if you understand the concept, no special formula is required. We can do things with the basic formula itself. We are going to demonstrate this in every single class. Focus emphasis on this in this class will be on developing the feel of the topic, developing the feel of the concept. कि समझ में आए आपको concept apply कैसे होता है. उसके बाद basic formula से ही हम लोग चीजें solve कर पाएंगे. हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी additional formulas याद. That is the whole idea behind this exercise. So if you guys have any doubt, you can always contact me on the number that is given in the description, or at the end of the class, I'm going to share that number on the board as well. And you can always visit the center, Smartwork Labs in Old Rajendra Nagar, New Delhi, and you can find the location of that on Google Maps as well. ठीक है, हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको स्मार्टवर्क लैब्स बताइए एंड गूगल मैप्स पे भी आपको मिल जाएगा. So we are going to have these sessions twice a week. Okay, once in the middle of the week and once on the weekend, and we are going to cover one or two topics in every session. So hopefully by the end of March, we'll be able to do substantial part which is required or which will be sufficient to clear the exam with a comfortable margin. We are not going to cover every topic. You don't have to learn every topic. That is the most important thing. जो भी difficult maths के part है, a lot of people find difficulty in permutation combination. A lot of people find difficulty in probability, so on and so forth. We are not going to cover such areas. We are going to cover areas जो basic है, जो simple है, concept से समझ में आ जाएगा आपको, जिसमें formula सबसे कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको, and which will be sufficient to clear the exam with a margin of 25-30 marks on the cutoff. That is the whole idea. ठीक है? All right. Now, today's topic is going to be speed, time, and distance. So, there are multiple
Formulas again, if you pick up any book, there are many books available. Ariant hai, Pearson hai, Tata McGraw-Hill hai, then multiple books are available, and you will find these chapters in every book. But if you open these chapters in these books, you will find a list of formulas. Okay, अगर ऐसे हो रहा है तो ये formula, ऐसे हो रहा है तो ये formula, ऐसे हो रहा है तो ये formula, right? This leads to a lot of confusion. So let's check all those formulas. और हम जो काम करने वाले हैं बिल्कुल एक ही फॉर्मूला पे काम करने वाले हैं, which is speed is equal to distance upon time. ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है. आई एम श्योर एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस. आप कहीं भी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, इफ यू आर गोइंग लाइक 200 किलोमीटर्स फ्रॉम योर होम एंड यू आर ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर्स पर आवर, या इफ यू टेक 4 आवर्स फॉर एग्जांपल, तो अब आपको स्पीड निकालनी है. सो 200 किलोमीटर्स 4 आवर्स में कवर किया आपने, तो एक घंटे में कितना कवर किया? 200 upon 4. सिंपल इज दैट. That is 50. So that is 50 kilometers per hour. This is that formula. I'm just telling those people who have no knowledge whatsoever about these things. So बहुत basic चीजें हैं. So this is the only formula that we are going to use. इसी को हम modify करते रहेंगे. कभी टाइम इधर आ गया, कभी डिस्टेंस इधर आ गया, so on and so forth. हमें इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. So speed, time, distance में we are going to cover simple questions, and then we are going to cover the train questions as well as the upstream, downstream questions, ports and stream questions. And UPSC tend to ask ports and stream questions, and UPSC tend to ask questions in which at least two vehicles, two cars or two trains are either going in the same direction or coming towards each other. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे, very specific to what UPSC asks. ठीक है, तो इस क्लास में मुझे फॉर्मूला कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ करना नहीं है. जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते रहेंगे, अकॉर्डिंगली हम समझते रहेंगे. I'll just raise this, keep it on the side, and then let's start. So I'll just put it over here. Speed is equal to distance upon time. तो अगर मैं इसको टाइम को धड़ जाता हूँ, स्पीड को धड़ जाता हूँ, so time taken in a journey will be equal to distance upon speed. यही फॉर्मूला है. और अगर मैं स्पीड को भी धड़ जाता हूँ, तो we can find distance traveled. बस इन्हीं चीज की जरूरत पड़ने वाली है आपको, और कुछ नहीं. बाकी सब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, बेसिक क्वेश्चन है जो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अ पर्सन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर एंड ही हैज टू ट्रैवल 900 किलोमीटर्स. हाउ मच टाइम दैट पर्सन विल टेक? ये बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन है? अ पर्सन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 kilometers per hour and he has to cover a distance of, let's say, 900 kilometers. How much time will he take to cover this journey? He or she take to cover the journey. Simple formula. आपको टाइम निकालना है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है. There are only three variables that are required in any of these questions. चाहे वो बोट का हो, चाहे वो ट्रेन का हो. If you have two of the three variables, you can always find the third. That is the only point over here, right? So time is equal to जितना डिस्टेंस आपने चला है और जितनी स्पीड पे आपने चला है. This is going to be 9 hours. This is a simple straightforward thing. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग. इतनी चीज आप सबको समझ में आती है. हम लोग अक्सर ट्रैवल करने जाते हैं, वी ऑलवेज कैलकुलेट कि कितना टाइम लगेगा. कहीं भी जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून और मसूरी, यू आर ट्रैवलिंग सम टाइम इन द फ्यूचर, you know the distance between Delhi and Mussoorie is around 250 kilometers. So you tend to calculate कि यार अच्छा अभी चलेंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे या 5 घंटे में पहुंच जाएंगे. How do you do that? We basically assume एक एवरेज स्पीड कि यार इतनी स्पीड पे तो हम चल ही सकते हैं. लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर चल सकते हैं. तो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब हर घंटे 60 किलोमीटर कवर कर रहे हैं हम ऑन एन एवरेज. तो 270 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे में हम 240 किलोमीटर कवर करेंगे एंड अनदर हाफ एन आवर रेस्ट ऑफ द 30 किलोमीटर. सो इनटू 4.5 hours you will be able to reach Delhi to मसूरी. ये सब हम आम टाइम में अपना करते रहते हैं. So this is exactly what this is, right? So it is as simple as that. इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा नहीं ऑब्वियसली.
So we have to think कि और डिफिकल्ट इसको कैसे करें. Before that, there is always a confusion कि 1 किलोमीटर पर आवर होता है कभी-कभी और दूसरा होता है मीटर पर सेकेंड. Okay, maybe the speed instead of 100 kilometer per hour is given as 50 meter per second. ठीक है, this is warp speed, कुछ ज्यादा ही तेज स्पीड है ये. So अगर 50 मीटर पर सेकंड दिया है और दिया है 900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो कैसे निकालोगे? दैट इज द पॉइंट, राइट? यू कैन नॉट बी कैलकुलेटिंग कि हर सेकंड में इतना चलेगा तो 9 से इतने टाइम में कितने सेकंड है और उसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देते हैं. इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. So let's say we have to convert meter per second into kilometer per hour. ठीक है, तो सिंपल आइडिया क्या है, आपको ये देखना है कि मीटर पर सेकंड है किलोमीटर है, कैसे कन्वर्ट करें. तो लेट्स 50 को हमें करना है. ठीक है, 50 मीटर में कितने, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर is equal to 1000 meter. That means 1 meter will have 1 upon 1000 किलोमीटर. ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्यों ना मैं इसको 1 upon 1000 लिखूं कि अच्छा 1 सेकंड में इतने किलोमीटर चल रहा है. और 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? 1 hour is equal to 3600 seconds, है ना? 60 minutes into 60 seconds. That is the idea. हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड. तो अगर 1 सेकंड में कितने घंटे हुए अगर हम बताएंगे तो हाउ कैन से इट विल बी 1 upon 3600. ठीक है, तो सेकंड को घंटे में कन्वर्ट कर दो तो इसको 1 upon 3600 कर दो. तो मैं थोड़ा डिफरेंट टर्म में लिखता हूं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे. सो बेसिक रूल होता है फ्रैक्शन का, अगर आपका a अपॉन b अपॉन c अपॉन d होता है तो do you know what we do? We take d above and we bring b below. Right? This is how it works. So it will be a into d upon b into c. ये बेसिक फ्रैक्शन का रूल है. तो इसमें भी यही कर देते हैं. तो इसमें a is 1, d is 3600. तो क्यों ना मैं इसको 50, तो ये वाला 50 है, कैसे लिखूं इसको? 1 into 3600, that is 3600. 1 into 3600 and b comes down with c. b is 1000, c is 1. So this is 1 into 1000. अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 100 कट गया, इधर 2 से डिवाइड कर दो, 5 इधर 18 इधर. So all you get is 50 into 18 upon 5. तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने में हमने 50 into 18 upon 5 किया, राइट? सिंपल एज दैट. So if I have to write it again over here, 50 meter per second will be equal to 50 into 18 upon 5 kilometer per hour. 180 किलोमीटर. ठीक है, आप इसको रट भी सकते हो सिंपल तरीके से कि भाई 5/18 और 18/5 दो हमें फ्रैक्शन चाहिए. सर कंफ्यूजन हो जाता है कि जहां 5/18 यूज करना है वहां 18/5 यूज कर लेते हैं, जहां 18/5 यूज करना है वहां 5/18 यूज कर लेते हैं. So this confusion should not be there. उसके लिए अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट कि ये आया कहां से. So if you have even the slightest doubt in the exam, this is like a very basic mistake and you will end up losing 2.5 marks. 2.5 नंबर तो जाएंगे ही, minus 1/3 और हो जाएगा. So while you were getting 2.5, you will end up losing 3.3, 3.4 marks approximately. तो वो नहीं चाहिए हमें. So keep that in mind कि ये आया कैसे है. Let me demonstrate it one more time from the opposite end now. So what did we do? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया हमने अभी. सो लेट्स से 10 था तो इसको हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया.
because 1 kilometer में 1/1000 meter and 1 hour में 1/3600. Sorry, 1 meter में 1/1000 kilometer and 1 second में 1/3600 hours. उसको हमने मल्टीप्लाई करके नीचे बना रखा है. This comes like this. अब अगर किलोमीटर पर आवर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. अगेन लेट्स से ये 100 किलोमीटर पर आवर है. तो 1 किलोमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1000 मीटर. और 1 घंटे में कितने सेकंड है? 3600. ठीक है, दो से डिवाइड किया. So this becomes 100 into 5/18. ठीक है, so किलोमीटर पर आवर gets converted into मीटर पर सेकंड like this. कंफ्यूजन नहीं होगा. अगर बाय चांस कंफ्यूजन है, सीधा किलोमीटर की जगह 100,000 रिप्लेस करो. कितना मीटर है? 1 घंटे में कितने सेकंड है उसको रिप्लेस करो. यू विल गेट एन आइडिया. यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, ऐसी चीजों में कंफ्यूज होने का कोई स्कोप नहीं है, कोई रीजन नहीं है. So these are the two formulas that we have created over here. अगर आपको नोट डाउन करना है 1 सेकंड के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए. मैं रुक जाता हूं. And I'll just write it again on the side now. So किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या कर रहे हो? इंटू 5/18 कर रहे हो. ठीक है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर रहे हो. इसके लिए आप क्या कर रहे हो? इंटू 18/5 कर रहे हो. So you can always cram this if you want. Obviously, बार-बार आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. But once you practice certain number of questions, it will come to your mind automatically. आप क्रैम करना चाहते हैं क्रैम कर लीजिए, और नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि एग्जैक्ट आया कैसे नंबर, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. आई होप दिस इज क्लियर. एनी डाउट सो फार? वन ऑफ माय स्टूडेंट आल्सो सजेस्टेड कि सर ऐसे याद कर लेते हैं कि बड़े से छोटा जाना है तो ऊपर छोटा रखेंगे, और छोटे से बड़ा जाना है तो ऊपर बड़ा रखेंगे. If you can remember like that, you can remember like that also. Right? One of the ways to remember. Now, let's pick up certain questions and different type of questions that can be asked. Speed, time and distance में से approximately 2 क्वेश्चन आते हैं on an average. Last year एक आया है, but 2 questions which are easy 5 marks अगर इसको समझ लें. ठीक है, very easy 5 marks that we can get. चलिए, now the kind of question UPSC tend to ask: a person has covered a certain distance at a certain speed and then remaining distance at another speed. What is the overall speed that the person maintains in the entire journey? So the question, if I pick up a question in general, so Mr. Kumar drive to work at an average speed of 48 kilometers per hour. ये थोड़ा we'll wait for this. Next में आते हैं इसमें. So let's take another question. Give me 1 second. Simple one, then we'll go up to a difficult question. So a person A covers 5 kilometer at 30 kilometer per hour and next 10 kilometers at 50 kilometers per hour. Calculate total time taken plus average speed. Right? So what do we have here? We have एक तो total distance हमें पता है.
कि भाई 5 kilometers he traveled once and then he traveled 10 kilometers. So total distance is 15 kilometers. There's no confusion in this, right? Now we have to calculate total time taken. So the first part of the journey, which is 5 kilometers, has been covered at a speed of 30 kilometers per hour. We'll have to break this down into two parts. So पहला part ये, second part ये. तो टाइम कैलकुलेट करना है पहले पार्ट के लिए. This will be total distance upon speed. यहाँ है हमारे पास same formula that we have been using. So first T1 जो first part की journey है, that is this. So I can simplify it to 1/6, divide कर देंगे. The second part, time 2, will be 10 kilometers upon 50 kilometer per hour. Again divide कर देंगे 1/5. 1/5, sorry. So total time will be how much? This time plus this time. Yeah. So T1 or time 1 plus T2. So 1/6 plus 1/5. एलसीएम में क्या आगे पढ़ाऊंगा वैसे आपको, बट आई होप इतना बेसिक आइडिया हो कि नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं. यू टेक द फैक्टर्स, राइट, ऑल द कॉमन फैक्टर्स. इसमें कोई कॉमन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 हो जाएगा. दिस विल बी 5 plus 6, 11/30. दिस इज द टोटल टाइम. हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट टोटल टाइम इज दिस इन जनरल. अगर आप देखें ये टाइम, ये किलोमीटर, ये सेकंड्स में है या आवर्स में है. सिंस एवरीथिंग इज इन किलोमीटर पर आवर, time that we are calculating will automatically come out to be in number of hours only. So this is 11/30 hours. ठीक है, ये total time हो गया. अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है. कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? कैन वी सिंपली से कि भाई 30 plus 50 upon 2 कर दें. दो स्पीड है और टोटल एवरेज कर दें. यस, नो, दिस इज द प्रॉब्लम. अगर ये एवरेज स्पीड करेंगे तो दिस विल कम आउट एज 40 किलोमीटर पर आवर. 30 plus 50 upon 2 कर दें. This is wrong. हमेशा एवरेज स्पीड निकालने का सिर्फ एक आपको कॉन्सेप्ट रखना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम ट्रैवल्ड. टोटल डिस्टेंस है हमारा 15, हमें एवरेज स्पीड निकालनी. नेवर just average out the speeds that are given. कि भाई 3 स्पीड दिए हैं तो प्लस 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 करके अपॉन 3 कर दो. This is not how it works, because एक तो डिस्टेंस भी अलग चल रहे हैं. So for a longer time we are traveling at certain other speed, for a lesser time we are traveling at certain other speed. अगर उसको आप सिंपली प्लस करके डिवाइड कर देंगे, that means you are assuming कि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं अलग अलग स्पीड पे, राइट. उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है सेम आए, राइट. ऑलवेज रिमेंबर एवरेज स्पीड ऑफ अ जर्नी. जैसे हम लोग भी अगर ट्रैवल करने जाते हैं, right, you don't travel at 60 kilometers pura duration of your travel. Sometimes you are traveling at 80, but sometimes in the city you are traveling at 30. So you tend to ask what is the average speed. So you don't keep a tab of how much different speeds were there during your entire journey and you add it and you divide it by that number. ऐसा नहीं करते ना. आप सिंपली क्या करते हो, कितना डिस्टेंस चला टोटल हमने, कि भाई 200 किलोमीटर आ गए हम, we have come 200 kilometers away from home और हमें लग गए 4 घंटे. This way you simply get the total average speed that is there. So guys, इसमें हमें वैल्यू भरनी है. So total distance traveled is 15 kilometers. So it is 15 over here. And total time that we saw was 11/30. तो ये 30 को ऊपर ले जाऊं मैं, अभी हमने देखा था. So this will be 15 into 30 upon 11. तो गाइस इसको कैलकुलेट करते हैं. Somebody try. 68 point. So this is coming out to be 68.18. नहीं, गलत कैलकुलेट. एवरेज स्पीड कभी भी मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती. एवरेज स्पीड कमिंग आउट टू बी इज 40.9. देखो, एक स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है. So average speed will have to be less than the highest speed that has been achieved. उससे ज्यादा कैसे हो सकती है?
तो अगर ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, सो कीप इन माइंड कि कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ऑप्शन में भी हो. द ऑप्शंस आर मेड सच कि एक जो बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए बना दिया जाता है. And the moment you see, अच्छा ये तो ये रहा, you take it and you move forward. That becomes a problem. So always cross verify that maximum speed से ज़्यादा average speed नहीं हो सकती है. ठीक है? Average उससे कम ही रहेगी. So it is 40.9. अगर हम normal कर देते 50 plus 30/2 तो वो 40 किलोमीटर आती. UPSC के options में there would be an option of 40 kilometers per hour also. There would be an option which is the correct option of this. There could be an option 60 point something, that the wrong calculation that was done just now. So such options will be there. You will be tempted to take, अच्छा ये तो बहुत आसान है, ये रहा सामने आंसर. Be very clear. Total always average speed निकालने की. Total distance upon total time taken करिए. Even if you have an example जहाँ पे first half of the journey was covered by at a speed of 40 kilometers per hour and second half of the journey was covered at a speed of 60 kilometers per hour. डोंट अज्यूम कि 40 प्लस 60 अपॉन 2 कर देंगे इस केस में, तो क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट है जर्नी के और 50 आंसर आ जाएगा. मत करिए ऐसा. 10 upon 40 is the time taken in the first journey. 10 upon 60 is the time taken in the second journey. दोनों को ऐड करिए, राइट? और टोटल डिस्टेंस 10 plus 10 20. So 20 upon total time. तब आप एवरेज निकालिए. एक बार ट्राई करके देखिए. Let's see how much average is coming out. As I said, first 10 kilometers at a speed of 40. And next 10 kilometers at a speed of 60. What is the average speed of this journey? The average speed that is coming out is 40. 50 नहीं आएगा. It is less than 50. आपको लगेगा कि मैं एवरेज आउट कर लूं क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस है. तो हम 40 किलोमीटर इतने डिस्टेंस चले, 60 किलोमीटर एन आवर पे इतना डिस्टेंस चले, एंड इफ बोथ द डिस्टेंस आर इक्वल, इट सीम्स वेरी टेम्पटिंग कि बस सिंपल प्लस कर दो और डिवाइड कर दो बाय 2. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट ऑलवेज हैव टू बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है? कभी भी ऐसे स्पीड को ऐड करके एवरेज मत निकालिए, नहीं निकलेगा कभी सही आंसर, राइट? अदरवाइज इट इज वेरी लॉजिकल टू सीम टू थिंक कि यार ये तो सेम है, 40 प्लस 60 अपॉन 2 कर दो, 100 अपॉन 2 50. तो 50 भी आंसर होगा, 48 भी आंसर होगा, राइट? 58 भी आंसर होगा. सो ऑल दीज आंसर्स विल बी देयर. कहीं ना कहीं आप और मिस्टेक कर सकते हैं तो उसके हिसाब से भी आंसर होगा. दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो हमेशा याद रखिए, नेवर डू दैट. एवरेज स्पीड हमेशा पूरा हम देखते हैं कितना डिस्टेंस चला है, कितना टाइम लगा, उसके हिसाब से निकल के आनी. ठीक है? हो सकता है बीच में कहीं रुके भी होते हैं आप, तो वहां पे जीरो को कैसे करेंगे? दैट डजंट काउंट. फिर उसको भी एवरेज स्पीड में आपको ऐड करना होता है. लेट्स से यू ट्रैवल्ड फॉर फर्स्ट 10 kilometers at 40 kilometers per hour, then you stop for 10 minutes, then you traveled again for 10 kilometers at 60 kilometers per hour. What is the average speed of the total journey? तो इसमें वेटिंग पीरियड भी तो है. तो पहले 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर की स्पीड से आप चले तो 10 अपॉन 40 टाइम लिया आपने. फिर 10 मिनट वेट किया तो 1 अपॉन 6 आर ये हो गया 10 मिनट, राइट? और फिर 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड पे चले आप, 10 अपॉन 60 हो गया 1 अपॉन 6. तो ये टोटल टाइम होगा. वेटिंग टाइम के लिए उसको ऐड करना है. देन यू टेक द टोटल टाइम डिवाइड डिवाइड टोटल डिस्टेंस विद दिस, यू गेट एन एवरेज स्पीड ऑफ द. ठीक है? दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज एज सिंपल एज दैट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब लेट्स टेक इट अप अ नॉच. यूपीएससी टेंड टू आस्क क्वेश्चंस कि एक one person was going at a certain speed. If he changes the speed, or the speed is lesser than that speed, or the person reaches 10 minutes late. If the speed is something else, the person reaches 40 minutes early. Then what is the actual speed at which it should the person should go so that the person reaches on time? ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी टेंड टू आस्क. कैसे अप्रोच करेंगे इसको? लेट्स सी.
चलो क्वेश्चन है, A travels to his school. Hold on. Next, Rajiv has to be at a certain place at a certain time. बंदा है राजीव. Okay. Has to be at a certain place at a certain time. He finds that he will be 40 minutes late if he travels at 3 km per hour. अगर 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो he'll be 40 minutes late. And he'll reach 30 minutes early if he goes at 4 km per hour. ठीक है? So how far does Rajiv have to walk? Find distance traveled. How far does distance to be traveled? अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वॉक करता है तो he gets 40 minutes late. अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वॉक करता है then he reaches 30 minutes early. Then how do you approach this question? हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे. Let's apply some logic. पहले तो अज्यूम करना है, क्या क्या अज्यूम करना है, हमें जो निकालना है उसको अज्यूम कर लेते हैं. Let distance traveled is equal to d. Let the distance traveled is equal to d. ठीक है? और अगर नॉर्मल स्पीड से चले कि ना लेट पहुंचे ना जल्दी पहुंचे, उस टाइम को मान लेते हैं टी. कि जब नॉर्मल टाइम पे पहुंचना है, ना लेट हो ना जल्दी पहुंचे, तो टी आवर्स. टी मिनट से टी आवर्स, आवर्स का टाइम चल रहा है, सो आवर्स में आएगा. सो टाइम टेकन रीच ऑन टाइम. ठीक है? अगर सही समय पे पहुंचना है तो टी टाइम यूज करके पहुंचना है. दैट इज द आइडिया. और डिस्टेंस चल रहा है टी. क्या करेंगे? एनी आइडिया पीपल? सम आइडिया? गिव सम आइडिया, लेट्स सी. पहला पार्ट लेके चलिए. 40 मिनट्स लेट पहुंचेगा अगर 3 किलोमीटर आवर की स्पीड पे चल रहा है. दैट मींस व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन? 3 और 4 के बीच में स्पीड. व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? मिनट्स को आवर्स में कर देंगे. आवर्स में कन्वर्ट. 40/60 हो गया. पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, केस 1. ये बोल रहा है कि अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 40 मिनट्स लेट पहुंच रहा है. किससे लेट? टी टाइम से लेट. दिस इज टी आवर्स. सो दैट मींस केस 1 में टाइम टेकन कितना हुआ? टी प्लस 40 मिनट्स, है ना? नॉर्मल टाइम में तो टी लेगा, बट स्लो चल रहा है तो 40 मिनट लेट है, तो टी प्लस 40 मिनट्स हो गया. सिंस टी आवर्स में है तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. राइट? तो कैन आई विल राइट इट एज टी प्लस 2/3 आवर्स. ठीक है? और दूसरा केस लेके चलते हैं. अगर दूसरा केस में अभी रुक रहा था, डिस्टेंस हमें पता है डी है, और स्पीड हमें पता है 3 किलोमीटर पर आवर. पहला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? डी अपॉन टाइम टेकन कितना है? टी प्लस 2/3. क्लियर सो फार? कोई किसी तरह का डाउट नहीं? अब सिमिलरली सेकंड केस ले लेते हैं. सेकंड केस में अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, देन द पर्सन इज टेकिंग 30 मिनट्स लेसर. राइट? सो इट विल टेक केस 2. Let me put case 2 over here.
Case 2 में time taken is, what is the time taken? T minus 30 minutes upon 60 hours, right? That means T minus 1/2. जल्दी पहुंच गया, सिंपल। और हमें इसमें स्पीड पता है, सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज 4, d is distance, time taken is t minus 1/2. What do you have to calculate in this? How far does he have to walk? हमें d निकालना है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और दो वेरिएबल्स हैं। जितने वेरिएबल्स होते हैं आपको उनको सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन सॉल्व समथिंग विद लेस नंबर ऑफ इक्वेशंस। ज्यादा हो तो चलेगा बट कम नहीं होने चाहिए। इफ देयर आर 5 वेरिएबल्स a b c d e, then to get the value of all 5 you need at least 5 equations. If there are 4 variables you need 4 equations. कितने वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए होती है? सिंपल फैक्ट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो अब हम दोनों वेरिएबल को निकाल सकते हैं अगर इसमें कैलकुलेट करें। ठीक है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसको मैं लिख देता हूं d इज इक्वल टू 4 इंटू टी माइनस हाफ, और इसको मैं लिख देता हूं d इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 2/3। दोनों d सेम है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, एक साथ लिखते हैं इसको। So let me write it as 4 into t minus 1/2 is equal to 3 into t plus 2/3. Try solving this equation. क्या कर सकते हैं equation solve? t is equal to 8 आ गया। अब डिस्टेंस निकाल लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन को लेके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको ले लो, इसको ले लो। नहीं, गड़बड़ होगी ना कैलकुलेशन, गड़बड़ होगी ना सारी कैलकुलेशन। तो चला गया, we did not do things over here. t की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। t यहाँ पे निकल के आएगा 4, ठीक है, 8 नहीं आएगा। This will be 14. Right? 14 kilometers is the distance that the person has to travel. Right? Simple question हुआ। इसमें एक अलग फॉर्मूला भी लगता है जो कंफ्यूजिंग हो सकता है कि पर आवर कितने मिनट बचा रहा है। तो उस मिनट को यूज करके हम वो कर सकते हैं कि भाई 1/3 minus 1/4 and all that करके। We don't want to go into that. Simple logic, same फॉर्मूला यूज किया है हमने। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको so that it gets into your head. 40 minutes late अगर 3 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है एंड 30 minutes sooner अगर 4 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है। तो व्हाट डिड वी डू? वी स्टार्टेड विद, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो लेट्स अज्यूम डिस्टेंस इज d एंड टाइम टेकन अगर नॉर्मल टाइम पे पहुंचे ना, लेट ना जल्दी, दैट इज t, राइट। तो केस 1 हमने लिया था जहां पे
टाइम वॉज रीचिंग 40 मिनट्स लेट, तो इतना टाइम लगेगा अगर 40 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस तो सेम ही चल रहा है, स्पीड हमें पता है 3 है। केस 2 हमने लिया, इसमें जल्दी पहुंच रहा है, आधा घंटा जल्दी पहुंच रहा है, तो जल्दी पहुंच गया, तो ऑब्वियसली जितना टाइम नॉर्मल लगता है उससे जल्दी इतना लगेगा, ठीक है। तो स्पीड गिवन है हमें, सो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला यूज करना है, विच इज 3, पहला केस में 3 इज इक्वल टू डी अपॉन टाइम, टी प्लस 2/3, एंड केस 2 में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डी अपॉन टाइम टी माइनस 1/, ठीक है। डी के लिए हमने इसको इक्वेट कर दिया, तो 3 इंटू टी प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4 इंटू टी माइनस 1/, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए एंड यू आर देयर, राइट। सो वी डिड द सिंपल थिंग, वी डिड नॉट अप्लाई एनी लॉजिक। इस बुक के हिसाब से इन्होंने लॉजिक दे रखा है कि सपोज बुक का देखते हैं, बुक में कितना कॉम्प्लिकेट कर रखा है काम। बुक में देखा है कि मान लो राजीव 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पहले, 1 किलोमीटर चलने के लिए पहले उसमें फर्स्ट केस में उसको 1/3 आवर्स चाहिए और सेकंड केस में उसको 1/4 आवर्स चाहिए। पहली बात तो 1 किलोमीटर जूम करने के बाद आगे कैसे बढ़ेंगे वही कंफ्यूजन, राइट। तो अगर आप लोग बुक से करते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं वो, दैट गेट्स कंफ्यूजिंग ओवर टाइम। तो इसमें बोला कि भाई 1 किलोमीटर चलने के लिए पहले केस में 1/3 आ रहा है और दूसरे केस में चलने के लिए 1/4 आ रहा है। सो इसमें है कि ओवरऑल कितना टाइम सेव कर रहा है सेकंड केस में फर्स्ट केस के मुकाबले, अप्रोक्सीमेटली 1/3 माइनस 1/4 अकॉर्डिंग टू दिस गाय, एंड दिस विल बी 5 मिनट्स, ठीक है। आ रहे हैं क्योंकि राइट 1/4 आर इज हाउ मच, 15 मिनट, 1/3 आर इज 20 मिनट, तो 5 मिनट सेव कर रहा है वो हर केस में, राइट। एंड देन जैसे कि भाई टोटल इसके हिसाब से ये कैसे इस पे आए, इसका आइडिया मुझे बहुत क्लियर नहीं है, बट दिस गाइस सेज कि टोटल टाइम सेव्ड इज 70। हाउ डू यू फिगर टोटल टाइम सेव्ड इज 70? ये बोल रहा है 40 plus 30 टोटल टाइम सेव्ड इज 70 मिनट्स। हाउ डू यू फिगर? Nobody knows. This is the problem with CSAT books. They come up with some random things, right? और ये टाइम से 5 है, तो उन्होंने बोला 70 को 5 से डिवाइड कर दो एंड यू गेट 40। दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आया क्या? मुझे भी नहीं आया, जरूरत ही नहीं है। कीप इट सिंपल, एज सिंपल एज पॉसिबल। ये 3 फॉर्मूला लगाना है बस हमें। ज्यादा टाइम लगा तो टाइम ऐड कर दो, कम टाइम लगा तो टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों के इक्वल कर दो, एंड ऑफ स्टोरी। कीप इट सिंपल, बुक से हमेशा कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास कि एक ही फॉर्मूले पे चलाएंगे सिर्फ, बाकी कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे अलग से। ये समझ में आया किसी को कि 5 मिनट सेव किया दूसरे केस में, है ना, और टोटल टाइम सेव किया, ऑब्वियसली इसने अब इसको रेफरेंस ले लिया कि 30 मिनट्स पहले भी पहुंच रहा है और इसकी वजह से 40 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, सो टोटल टाइम सेव्ड इज 70 मिनट्स। बट दिस विल गेट कंफ्यूजिंग इन द एग्जाम, ठीक है, तो इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है हमें। चलिए, so we were at एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो हमने निकाला अभी, टोटल डिस्टेंस टाइम। इसको याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है एक, इसको सॉल्व करिए, एवरेज स्पीड का।
A man walks from one place to another at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर. A पॉइंट से B पॉइंट जा रहा है at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ. And returns to the starting place at a speed of 3 kilometers per hour. वापस आ रहे हैं. So what is the average speed? Please tell me. What is the average speed? How will you do it? निकालिए जल्दी से. पहली बात तो ये देखना है, इसमें 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको. 4, 4.5, 4.25, 3.75. 3.75, 4, could be 4. सेम डिस्टेंस गया एक स्पीड में, सेम डिस्टेंस आया एक दूसरी स्पीड में. कैन आई डू 5 plus 3.2? नो. ठीक है, तो 5 plus 3.2 नहीं करेंगे. तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड देखना है. पहले तो डिस्टेंस दिया नहीं है, तो डिस्टेंस अज्यूम कर लीजिए डी. तो टोटल डिस्टेंस डी गया, डी वापस आया. टोटल टाइम, फर्स्ट केस में जाने के केस में टाइम क्या हुआ, डी अपॉन 5. आने के केस में टाइम हुआ डी अपॉन 3. तो टोटल टाइम डी अपॉन 5 प्लस डी अपॉन. तो एवरेज स्पीड डी प्लस डी अपॉन d by 5 plus d by. You will get the answer as 3.75. क्या इस केस में कैन वी से कि एवरेज स्पीड 3 से कम हो सकती है? इफ द ऑप्शंस, अगर ऑप्शन इससे लिखे होंगे कि 2.75 है, 5.25 है. सो क्या हम देख के कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं? That average speed cannot be more than the highest speed and it cannot be lower than the lowest speed. तो एटलीस्ट ये दो एलिमेंट हो जाते हैं. अब आपको सिर्फ इन दोनों में निकालना है. ठीक है, सो देन यू क्विकली कैलकुलेट एंड ट्राई टू फाइंड द सम. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी समटाइम्स ये तीसरा भी ऐसा दिया हो कि देख के एलिमिनेट होगा, तो उसको ध्यान रखिए. ठीक है, एवरेज स्पीड कैन नॉट बी मोर देन द हाईएस्ट स्पीड एंड इट कैन नॉट बी लोअर देन द लोएस्ट स्पीड. नॉर्मल सी बात है कि जितनी स्पीड में चल रहे हो उससे कम में कैसे, उससे कम टाइम कैसे, उससे कम स्पीड कैसे हो सकती है? उससे तो ज्यादा ही होगी. अगर किसी एक स्पीड पे चले, फिर ज्यादा चले, फिर स्लो चले, फिर ज्यादा चले, तो स्लोएस्ट से स्लो नहीं होगी और हाईएस्ट से हाई नहीं जा सकती. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन इज दैट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, देखें क्या कर रहे हैं. The question is, Ajay starts in a car from Chandigarh to Delhi at 11 a.m. अजय है चंडीगढ़ से दिल्ली आना उसका, पता नहीं क्यों आ रहा है. 11 बजे चला है सुबह. He starts at 11 a.m. in the morning. He traveled at 60 kilometers per hour and covered half the distance in 2 hours. अज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस d है, तो आधा डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कितने घंटे में? 2 घंटे में कवर कर. मेक सेंस? At what uniform speed should he travel to reach Delhi by 4 p.m? तो अब बाकी डिस्टेंस किस स्पीड पे चले कि वो 4 बजे दिल्ली पहुंचे?
उसको दिल्ली पहुंचना 4 बजे। तो किस स्पीड पे पहुंचे कि वो 4 बजे पहुंचे? बताइए। कैसे करेंगे इसको? D/2 चला है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 2 घंटे में। तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कितना डिस्टेंस चला होगा? 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कितना डिस्टेंस चला होगा? स्पीड इंटू टाइम, 60 इंटू, and this is half the distance. So remaining half is again 120 kilometers. उसको पहुंचना है 4 बजे। आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम हो गया? 2 घंटे हो गए। दैट मीन्स 1 PM is already in the clock. So now he has how much time to reach? He has 3 hours more to reach. और कितना डिस्टेंस चलना है? 120 kilometers. Simple, right? So speed is equal to distance upon time. कितना होगा? 40 kilometers per hour. This is the average speed. Simple question. तो बेसिक क्वेश्चंस तो यही होते हैं इसमें। अब देखते हैं, लेट्स कम टू बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले पार्ट। आई थिंक इसमें तो और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई विल अपलोड और टेस्ट क्या कहते हैं प्रैक्टिस शीट इन द डिस्क्रिप्शन आफ्टर द क्लास। बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं। सो देयर आर जनरली 2-3 थिंग्स इन दिस। एक तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है, ठीक है, टाइम टेकन पूछते हैं। अब दो चीजें हैं, स्पीड ऑफ बोट होती है एक, और स्ट्रीम जो पानी बह रहा है उसकी भी एक स्पीड होती है। Now let's imagine things. Whenever you are basically how do you say, आप बोट में बैठे, ठीक है, अगर आप किसी तेज बहाव वाली नदी में जा रहे हैं तो एक स्पीड आपकी बोट की है और एक स्पीड नदी की है। तो आपको बहुत कम एफर्ट में बहुत तेज स्पीड पे जा सकते हैं आप। दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम देन यू आर हेल्प्ड बाय द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑल्सो। सो आपकी ओवरऑल स्पीड कितनी बन जाती है? बोट की स्पीड प्लस जो स्ट्रीम की स्पीड है। जितनी देर स्ट्रीम जा रहा है उतनी देर आप जा रहे हो, राइट? तो एक चीज होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब जब आप फ्लो के साथ जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, फ्लो इज ऑलवेज अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, है ना, ऊपर से नीचे जाता है। तो जब आप फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड जो होगी वो होगा स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ एस्केलेटर्स वगैरह में जब आप चलते हैं, it's like that. You are walking and the escalator is also going at a certain speed. If you are going the same direction, especially airports पे या malls में, right? Travelators and escalators पे, so you tend to reach faster because you are aided with the speed of the escalator or the travelator. So that is how it works. अगर आप उसमें opposite direction में जा रहे हैं, तो obviously you have to put a lot more effort and it takes you much longer. आप जो normal cities से उतर आते हैं, right? So upstream speed, जैसे एस्केलेटर में चढ़ रहे हो आप मॉल में, उस वाले एस्केलेटर पे जो नीचे आता है, देन यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम,
तो उसमें आपकी स्पीड जो बोट की होती है या आपकी जो स्पीड होती है वो इफेक्टिवली कम हो जाती है, क्योंकि आपको एक्सीलरेटर नीचे भी ला रहा है धीरे धीरे, राइट? So your effective speed will become speed of boat minus speed of streams. Simple as that, right? बस इतना ही याद रखना है इसमें, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है? सो अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल दे रखा है कि बस 50 किलोमीटर जाना है आपको और स्पीड ऑफ बोट दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, आपको टाइम टेकन निकालना है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. व्हाट विल यू डू? यू विल सिंपली यूज द सेम फॉर्मूला अगेन. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस आपको पता है कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 50 किलोमीटर अपॉन टाइम. अपस्ट्रीम निकाल, डाउनस्ट्रीम निकाल रहे हैं पहले, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड देखेंगे, नीचे आते हुए तेज जा रहे हो आप, स्ट्रीम की स्पीड के साथ जा रहे हो, सो योर स्पीड एट ओवर हियर इज 10 plus 15 kilometers per hour. Yes. So time taken is equal to 50 upon 50. Simple as that. तो ये कितना बना? 10 by 3. That is 3.33 hours. ठीक है? एक ही फॉर्मूला है, कोई और फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे हैं. ये सब तो फील वाली बात है. आंखें बंद करिए, एस्केलेटर पे चढ़ जाइए. अगर भूल गए हैं तो याद आ जाएगा. एस्केलेटर के साथ जा रहे हैं तो तेज पहुंच जाते हैं, एस्केलेटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्लोली पहुंचते हैं. So the stream is nothing but the escalator or the travelator at the airports and in the malls. And the boat is nothing but you when you are traveling along with the escalator, when you are going against the escalator. अगर आपको स्पीड निकालनी आ गई तो सेम फॉर्मूला ही लगाना है, और कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं. अगेन ओनली वन फॉर्मूला. अब टाइम टेकन अगर अपस्ट्रीम पूछ रहे हैं तो आप नदी के बहाव के अगेंस्ट जा रहे हो, राइट? तो डिस्टेंस तो सेम ही है और स्पीड कितना है इस केस में? 10 किलोमीटर आपकी स्पीड माइनस 5 किलोमीटर स्ट्रीम की स्पीड, तो 5 किलोमीटर पर आवर हो गया. ठीक है? दिस बिकम्स 10 hours. सो जो डिस्टेंस नीचे आते हुए 3.3 आवर्स में हो गया था, वही डिस्टेंस ऊपर जाते हुए 10 आवर्स में. There could be a question, what will be the time taken to go from point A to point B if there is no flow in the stream, in still water basically. तब क्या करेंगे? Time taken in still water. Total distance. आपकी स्पीड कितनी है इस केस में? अब स्ट्रीम की स्पीड हो जाती है 0. That means normal 10. So 5 hours. ठीक है? There can be a question in which what is the time taken by the boat to reach from point A to point B if the boat is not motorized and no effort is being put on the boat? Then what will happen? बोट पे कोई जोर नहीं लगा रहे हैं, कोई चप्पू नहीं चला रहा है, कोई मोटर नहीं है. आप वहीं खड़े रहोगे या स्ट्रीम के साथ चलोगे? आप स्ट्रीम के साथ चलोगे. So in that case, the speed that you'll have to take is that of the stream and nothing else. तो उस केस में 50 upon 5. ठीक है? सिर्फ एक फॉर्मूला, बाकी सब बेसिक लाइफ की लॉजिक, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. ये होता है बोट्स ऑफ स्ट्रीम. इसके 2-3 क्वेश्चन देख सकते हैं हम अभी. दिस इज द लास्ट टॉपिक वी आर डूइंग टुडे. वी विल डू द रेस्ट पार्ट टुमारो, सो इन द नेक्स्ट क्लास. ट्रेन वाला जो है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा घूम के आता है. क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, okay, the question says that a boat covers 20 kilometer upstream, 24 kilometer upstream and 36 kilometer distance दिया है. 24 kilometer upstream plus 36 kilometer downstream.
ठीक है, इन 6 आवर्स। सेकेंड पार्ट है, एंड इट कवर्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 24 kilometers downstream in 6.5 hours. क्या करेंगे इसमें? गिव मी सम आइडिया। निकालना क्या है? क्या क्या निकाल सकते हैं? चलो ये बताओ, क्या क्या निकाल सकते हैं? सब निकालेंगे, जो निकाल सकते हैं। आपको टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड निकाल सकते हो इसमें, और हमारे पास दो ऑप्शन है स्पीड निकालने के। बोट की स्पीड निकाल सकते हो आप, और स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हो। दोनों निकाल लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। जब डिस्टेंस और टाइम दिया है, स्पीड निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए दिमाग, क्या निकालना है। ठीक है, दैट्स द आइडिया। कैसे करेंगे? एनी आइडिया हाउ विल यू डू इट? सबसे पहले तो अज्यूम कर लीजिए जो निकालना है हमें, है ना। बोट की स्पीड मान लेते हैं वेलोसिटी b, और स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं वेलोसिटी s। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास है ही, टाइम दे रखा है, तो टाइम सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे, सिंपल लॉजिक है। कैसे अप्रोच करते हैं आप इसको वैसे? एनी आइडिया, क्विक आइडिया? थिंक तभी तो चलेगा। हाउ विल यू अप्रोच, व्हाट विल यू डू? थोड़ा जोर से बोलें प्लीज। अपस्ट्रीम में बीबी माइनस वी एस कर देंगे, ओके। और डाउनस्ट्रीम में प्लस कर देंगे। क्या इक्वेशन बनाऊं पहली? गिव मी एन आइडिया, मेक इट ऑन योर पीस ऑफ पेपर एंड देन टेल मी, लेट्स क्विकली सी। दैट्स द होल आइडिया। मेक द फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड ऑन द फर्स्ट केस। ये फॉर्मूला है, इसमें बनानी है आपको, बस और कुछ नहीं करना। हम्म 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, किस स्पीड पे गया है? किस स्पीड पे गया अपस्ट्रीम? वेयर इज द आवर्स? अरे ये निकालना है, सिंपल रखो ना, घबरा के लो, सिंपल रखो। डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, टाइम कितना होगा? 24 अपॉन द स्पीड दैट इज देयर। तो टाइम की अगर हम बात करते हैं, पहला लेग में जब वो अपस्ट्रीम जा रहा था, तो क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं हो जाएगा? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भी आया, कितना आया? 36 किलोमीटर आया। टोटल डिस्टेंस अपॉन वीबी माइनस वीबी प्लस वी, और ये टाइम कितना दिया हुआ है? 6 आवर्स। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव इन दिस? 2 वीबी एंड वीएस, दैट मींस वी नीड वन मोर इक्वेशन। वेयर इज दैट इक्वेशन कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम हियर। Shall we do the same thing again? 6.5 is equal to 36 by VB। घबरा के लो, सही बोल रहे हो। एंड क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही, प्लस 24 अपॉन VB प्लस VS। बन गई तो इक्वेशन। दो वेरिएबल है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप यहां तक आ गए, फिर सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। द होल पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि निकालना कैसे है,
6.5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 13/2 में। ठीक है, अब कर लो इसको, सॉल्व करते हैं कोई की। 6 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेना है आपको, दिस एंड दिस विल मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, एलसीएम लेना तो आधा ही हो गया हमको। 24 इंटू बीबी प्लस वीएस प्लस 36 इंटू बीबी माइनस वीएस कौन बीबी प्लस वीएस बीबी माइनस, ठीक है, 6 तो ये हो गया। एंड 13/2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, व्हाट विल डू, दिस सीम्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। What will you do to solve this? Okay, and यहाँ पे बीबी स्क्वायर आ जाएगा, फिर स्क्वायर स्क्वायर कहाँ पे काटोगे? Yes. इक्वेशन डिवाइड कर दो, आकाश सही बोल रहे हैं, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, you will get a simple relation between V and S, and then you can put that anywhere in the first equation. जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल हो जाता है, it's a simple BBVS equation after that. Yes, and then you can find out. बताइए क्या है आंसर, लेट्स सी, वेट करें। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितना आ रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम? यार इसमें क्या हो गया, सॉल्व करता हूँ इसको, डिवाइड किया हमने तो इसका एक तरफ आया 12, ये ऊपर चला जाएगा, एंड 24 वीबी प्लस 36 वीबी, ठीक है, 24 वीबी यहाँ से 36 वीबी यहाँ से, 60 वीबी हो गया, एंड 24 वीएस माइनस 36 वीएस माइनस 12 वीएस हो गया, नीचे 13 है, 36 वीबी प्लस 24 वीबी 60 वीबी हो गया, एंड 36 वीएस माइनस 24 वीएस प्लस 12 वीएस हो गया, ठीक है। अब इसको एक बना लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ,
इसको जो इधर, इसको जो इधर, ठीक है, तो ये खाली 60 बीबी रह जाएगा इधर, 13 इंटू 60 माइनस 12 इंटू 60, एक 60 रह जाएगा, 60 बीबी will be equal to 25 into 12 बीएस हो जाएगा ये। 12 बजे 60, 5 बजे 25, तो 5 बीएस इक्वल टू बीबी। नाउ यू हैव दिस, इसको किसी भी एक चीज में डाल दो, यू विल गेट द आंसर। निकालना क्या है हमें, स्ट्रीम की अगर निकालनी है तो बीबी को रिप्लेस कर दीजिए, सीधा स्ट्रीम निकल आएगी। अगर बीबी की बोर्ड की निकालनी है तो स्ट्रीम का बीएस को रिप्लेस कर दीजिए बी से, तो सीधा वो निकल आएगा। ठीक है, डिड यू कम टू दिस? यस, नाउ पुट एनी वैल्यू इन दिस, किसी में भी डाल दीजिए, बीबी को 5 बीएस हर जगह लिख दीजिए। लेट्स राइट 5 बीएस ओवर हियर, लेट्स राइट 5 बीएस ओवर हियर। ठीक है, इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है। तो 6 इज इक्वल टू 24/4 बीएस प्लस 36/6 बीएस, है ऊपर, है ऊपर। 6 is equal to 6 by bs plus 6 by bs, तो ये कितना हो गया, 12 by bs, यहाँ से bs is equal to this is the lengthier questions of boats and streams, यहाँ पे ऐसा होता है, this is probably the lengthiest of all, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल हैं और इस तरह से है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉन्गर उसमें। तो स्ट्रीम की निकल आई 2, तो बोर्ड की कितनी है, कहाँ प्रेस करो, इसको करोगे सब तो VP is equal to 5 into 2, which is 10. But did we use any other formula except for speed, time and distance? No. Logic समझ में आना चाहिए। एक और ट्राई कर लेते हैं, then we'll stop. Let's see if we are able to solve. Then after that, I'll give you this thing. Worksheet I'll upload by evening. Practice 30-40 questions on each topic and simplify things. फिर एक कॉन्टेक्स्ट में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्लास में ट्रेन्स का बात करेंगे। लिखिए, A boat goes 8 kilometer in 1 hour along the stream. Boat 8 kilometer 1 hour along the stream का मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम। And 2 kilometer in 1 hour against the stream. Against the stream is so let's find out the speed of stream as well as boat. करिए क्या करेंगे, वही अज्यूम करिए, बोट की स्पीड VB, स्ट्रीम की स्पीड VS, एक्स और वाई भी ले सकते हो। 1 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में डाउन स्ट्रीम, क्या बना इक्वेशन पहली, तो वो तो टेक्निकली स्पीड ही 8 किलोमीटर पर आवर हो गई और नीचे वाली स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। यस, ट्रेन की स्पीड कैसे नहीं होगी, निकालो देखें, सिंपल क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई आपकी VB प्लस VS, ठीक है, डिस्टेंस चला 8 किलोमीटर, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रख दूं, और स्ट्रीम के केस में VB माइनस VS इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला ही है, निकाल लीजिए इसको, क्या कर दूं, ऐड कर दूं,
ठीक है, तो वीएस कितना बताया था मैंने आपको स्ट्रीम की स्पीड अभी 6 किलोमीटर बताई थी आपने। आर यू श्योर विच आर आएगी, कितनी आएगी स्ट्रीम की स्पीड बताइए, कैलकुलेट स्ट्रीम स्पीड निकालिए। निकालिए मैडम, जो डायरेक्ट आ रहा था निकालिए निकालिए जल्दी जल्दी, लेट्स सी। She's getting it wrong, that's why we are trying. She got 6, she got 4. सिंपल है यार। Yes, it was a simple question. ये कंफ्यूजन हो जाएगा, वहाँ 6 भी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, दैट इज वाई डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन, पुट समथिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड देन गेट द आंसर। सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं अदरवाइज ऐसे इफ यू जंप ऑन द कंक्लूजन, राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन करते हैं चलो। रमेश कैन रो along the current at 20 kilometers per hour. Let us see. Rowing वाला रमेश, हो गया सुरेश। रमेश कैन रो along the current at 20 kilometers per hour and against current at 16 kilometers per hour. ठीक है, the question asks find his rate of speed in still water. Still water speed of रमेश निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देता हूं, लेट्स सी। 18, 20, 10, 2/3, चौथा है 21, 3/2। These are the 4 options available to you. क्या करेंगे इसमें? When the question is such that Ramesh can row at 20 kilometers per hour downstream or along the stream, what does it mean? Whose speed is this 20? रमेश का, stream का या किसका? दोनों का मिला के, है ना, सिंपल एज दैट। सो अगेन सेम आइडिया, रमेश की स्पीड ले लीजिए वी आर, बिल्कुल निकाल सकते हो, बट हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, निकाल तो हम बिल्कुल सकते हैं उससे, क्या करना है बताइए, क्यों? ये एवरेज स्पीड नहीं, ये मैक्सिमम मिनिमम स्पीड नहीं है मैडम, ये अगेंस्ट समथिंग यू आर गोइंग एंड अलोंग समथिंग यू आर गोइंग, सो यू आर एडिंग सम स्पीड एंड यू आर गेटिंग अ रेजिस्टेंस। लेट्स सी, करके देखते हैं, हो सकता है तुम सही हो, बट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वी आर प्लस वी एस इज 20 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एंड वी आर माइनस वी एस किलोमीटर पर अपस्ट्रीम। अब करके देखिए, गिविंग यू अ मिनट।
लेट्स सी, निकालिए आंसर। क्या आएगा? और स्ट्रीम क्या आ रही है? सेम हो गया है तो। स्ट्रीम क्या आ रही है? 2। कैसे निकाला आपने? वही सब ऐड कर दिया पहले। सो यू गेट रमेश की स्पीड इज 80। So VR here you will get as 80 and VS you will get as 2. So still whatever Ramesh की स्पीड कितनी हुई? 18। तो ये still water speed ही तो है। When we are talking about individual speed, it is a still water speed, right? Either the stream now is aiding it or resisting it, right? So VR ही निकालना था, simple straightforward question था again. We can go by that if you are confident about it. Do 50 questions and then you go by that. There is no problem in that, right? There is no denying. Obviously 20 नहीं हो सकती क्योंकि maximum 20 है, ठीक है? और 10 2 by 3 20 by 2 by 3 3 by 2 थोड़ा सा वो कम हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है एक कम हो जाता है, right? ज्यादा भी नहीं हो सकती उसकी स्पीड क्योंकि डाउनस्ट्रीम से ज्यादा कैसे जाएगा और, right? So we can definitely go by that, but let's be sure by practicing more and more questions. ठीक है, और करना है। यूपीएससी का एक आध क्वेश्चन देखते हैं, वेट करिए। लेट्स सी यूपीएससी क्वेश्चंस बॉटम स्ट्रीम पे क्या आया था। चलो दो तीन यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, नॉट जस्ट बॉटम स्ट्रीम, देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई। We'll practice more questions. There will be sessions for practice also. ठीक है, अदरवाइज वो आप प्रैक्टिस तो करोगे नहीं। A car travels from place X to Y at an average speed of v km/h. ठीक है, from Y to X at an average speed of 2v. तो ये X to Y है, Y to X आ रहा है। Then again from X to Y at an average speed of 3v. तीसरा राउंड मारा है। And then again from Y to X at an average speed of 4v. चौथा राउंड मारा है। Then the average speed of the car for the entire journey will be what? चार ऑप्शंस दिए इन्होंने, लेस देन v, between v and 2v, between 2v and 3v, and between 3v and 4v. What? How will you do it? Explain first and then jump on to doing it. What will you do? Quickly. क्या करोगे? सिंपल क्वेश्चन समझाया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? अगर हम d की डिस्टेंस को d एज्यूम कर लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस विल बी 4, he went 4 times, so 4d, and then total time, टोटल टाइम कितना कैसे निकालेंगे? हाउ विल कैलकुलेट टोटल टाइम? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
देन हाउ विल डू इट? हर एक का अलग अलग टाइम निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे. यस, सिंपल एज दैट. इसका टाइम कितना? डी बाई वी. इसका टाइम कितना? डी बाई टू वी. इसका टाइम कितना? डी बाई थ्री वी. और इसका टाइम कितना? डी बाई फोर वी. सबको ऐड कर दीजिए, टोटल टाइम हो जाएगा. टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, और कुछ नहीं करना. सिंपल एज दैट. हर चीज में एक ही लॉजिक लगना है, कुछ लगना ही नहीं. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू सी सैट. एक अगर कॉन्सेप्ट है तो उसमें हम एक ही लॉजिक लगाएंगे, एक टाइप है. अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस है, नो मैटर व्हाट कम्स, एक ही फॉर्मूले से सब सॉल्व करेंगे. डू नॉट हैव टू रिमेंबर 10 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर स्पीड. अक्सर सब लोग कहते हैं कि स्पीड करने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. आई डिसएग्री. अगर आपको क्वेश्चन आता है, टू आर द मोर देन सफिशिएंट टू डू 80 क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन ही नहीं आता तो कितना भी फॉर्मूला याद कर लोगे, प्रॉब्लम ही होगी. Formula will definitely give you speed, but this paper is not about speed. You don't have to do 80 questions first of all. All you have to do is 60 questions properly. Right? उसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो किसी भी क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. नो मैटर हाउ बिग द क्वेश्चन इज. कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दें. ठीक है, 25 कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के 35-40 क्वेश्चन आप ये कर रहे हैं, 40-45 मिनट्स इज ऑल दैट यू नीड. एंड रिमेनिंग 40 मिनट्स इज 25 फॉर दोस 25 कॉम्प्रिहेंशन. यू स्टिल आर लेफ्ट विद 20 क्वेश्चन. हम क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं आता, हम 10 तरह के दिमाग लगाते हैं और इस वजह से टाइम वेस्ट करते हैं हर क्वेश्चन. एज लॉन्ग एज यू कीप इट सिंपल, ठीक है, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा. ट्रस्ट मी, आई डोंट नो अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज. नॉट बिकॉज आई डोंट नो, बट आई डोंट वांट टू रिवाइज देम और रिमेंबर देम. है ना, बचपन से मैथ पढ़ी है इंजीनियर हूं मैं से, बट जरूरत ही नहीं है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद हियर. डोंट रिमेंबर 100 फॉर्मूलाज. Break down the problem to the basics. Distance is equal to speed upon time. ऐसे ही हम क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स करेंगे, ऐसे ही हम बाकी सारी टाइम एंड वर्क भी हम ऐसे करेंगे. राइट, दैट फ्लो प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही करेंगे हम, और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी सब ऐसे ही करेंगे. एक चीज पता होनी चाहिए बस, एक टाइप के क्वेश्चन हो जाए. निकालिए इसको, कितना निकल रहा है. एलसीएम ले लो. चार्ट में 12 एलसीएम है. एलसीएम मिले सिखाऊंगा, नंबर से सबमिट करेंगे. तो यहाँ पे 12 प्लस 6 18, 18 और 7 22, 22 और 3 25. So this will be 25D. I am solving it faster speed now. So 4D upon 25D upon 12B. है ना? तो डाल दें. 12B ऊपर जाएगा, 25B ऊपर जाएगा. 12B ऊपर जाएगा. D से D काटो. 48 upon 25B. So what will be the answer? Between V and 2B. कल नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेन्स की प्रॉब्लम करेंगे, उसमें भी हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे और कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करेंगे. I have a book in front of me. I can see 18 formulas in these three concepts. ऐसा है तो 2xy upon x plus y कर लो, ऐसा है तो ये कर लो, ऐसा है तो वो कर लो. If you have to remember so many formulas, you are bound to make mistakes. Okay, so नहीं करना है इतना यार. फंडामेंटल पे रहिए, कभी गलती नहीं होगी. I used to finish the paper in 1 hour 15 minutes. 80 क्वेश्चंस करता था, क्योंकि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कौन सा फॉर्मूला लिखना है, कौन सा फॉर्मूला से लगाना है. That's the idea. चलिए. Okay, so we'll stop here. कुछ टेक्निकल इश्यू भी लग रहा है, वीडियो ब्लर है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. टू पीपल हैव सेड दिस बिफोर आल्सो. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके और थोड़े से डिटेल क्वेश्चंस करेंगे, एंड ट्रेन्स एंड दिस थिंग विल डू. सो विल फिनिश दिस टॉपिक एंड विल ऐड क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 साल से. This year there were around 4 questions. Last year there were 3 questions. The year before that there were again 2 or 3 questions. So next topic में हम लोग clocks and calendar समझेंगे, right? So these two topics together will secure around 6 questions. 6 questions is 15 marks. We are already quarter way through to our cutoff almost.
ठीक है, 10 सवाल इंग्लिश पे कम कर ही लेंगे, 25 नंबर तो आ जाएंगे नोट्स। तो 25 और 15 40 पे आ चुके हैं ऑलरेडी कल नेक्स्ट क्लास के बाद। We'll do few topics, we'll do them in such a way कि गलत होने का स्कोप ही नहीं। We'll do number system also, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, we'll be able to solve divisibility problems and all that, वो सब बहुत आराम से, again same idea, बहुत सिंपल तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, practice some questions, pick up questions from anywhere, okay, pick up any book. I'll also upload a worksheet, उसमें solutions नहीं रहेंगे, answers रहेंगे। चलो प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इफ यू वांट टू गेट इन टच, वैसे तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज यू कैन गेट इन टच विद अस एट anupam@smartworklabs.in. You can always WhatsApp us through the website also. There's a link, there's a tab where you can WhatsApp us through the website, or you can get in touch directly at 9667 461 651. ठीक है, so my name is Anupam. Through this, you can get in touch directly with me, and whatever problems you have, we will solve that. CSAT fail नहीं करना है, no matter what. GS तो अच्छे से करना ही है, but CSAT fail बिल्कुल नहीं करना, right? चलिए, so we'll stop here today. We'll have some quick sessions like this over the next 2 months, and we will make sure that our CSAT is secure. Okay? All right. Thank you, people. Have a good evening. बहुत प्रॉब्लम है यार।